Hello guys, good evening and welcome to the YouTube channel of PRATHAM Test Prep. Myself Juhi Sharma, and here we are with yet another video specifically for class 11 on the topic revenue, right? So we do conduct sessions for class 11 and 12 right on Wednesdays and Friday on Saturdays. Okay, so yes, the next topic for class 11 is revenue. Okay, in the last topic, we have covered the topic cost, and right now we are covering the topic revenue. Okay, now guys, it is a very important topic for your exams point of view. So make sure that you understand, make sure that you know, or if you already know this topic, then make sure that you note down the important stuff which you feel that are important from the entrances exam point of view. Okay, now starting with the very first slide, what actually is revenue? Revenue actually hota kya hai? Okay, so revenue is the amount which a producer gets in exchange for the sales. Okay, जो भी सेल हो रही होती है प्रोड्यूसर की, जो भी प्रोड्यूसर अपना अमाउंट सेल करता है, जो भी क्वांटिटी प्रोड्यूसर सेल करता है, सो उसके बाद whatever the producer is getting, okay, whatever the producer is getting, that particular amount is known as revenue. Okay, हम बोलते हैं ना that revenue generated so and so. So basically it is what? It is the amount of money that a producer gets in exchange for the sales. Okay, sales को sales होने के बाद जो producer को जो amount मिलता है, that actually is known as revenue. Okay, now for example, if it's given already in front of you that let's say that a dairy farm, they sold or they sell milk products for 52,000 rupees. So 52,000 क्या होगा? 52,000, the amount of 52,000 will be their revenue. Okay, now as we have studied cost में हमने क्या क्या पढ़ा था? Cost में हमने पढ़ा था that there is total cost, there is marginal cost, there is average cost. Likewise, when I have to tell you about revenue, there are three terms which are related to this concept of revenue. क्या क्या है? We have total revenue represented by TR. We have marginal revenue represented by MR. And then we have average revenue, which is represented by AR. Okay. Now, cost and revenue, they are more or less the same concept. बिल्कुल उनका same concept है cost और revenue का, right? Same as in similar concept of both cost and revenue. ठीक है? Now, let's see what is total revenue. Total revenue क्या है? जो total receipt से refer हो रहा है, what the amount is being sold, what is the quantity of a product is being sold in the market. उसका जो receipt है, that is actually known as what? That is actually known as the total revenue. Okay, what is total revenue? Total revenue refers to the total receipts from the sale of a given quantity of commodity. It can be anything, right? So जितने भी total sales हुए हैं, उसकी जो receipt मिली है, that is known as what? That is known as the total revenue. कि जितने sales हैं उसके हिसाब से what is the revenue that is being generated? That is known as total revenue. अब ये जो revenue है, वो क्या होगा? प्रोड्यूसर का, प्रोड्यूसर जो प्रोडक्शन हाउस चला रहा है या प्रोड्यूसर जो फर्म चला रहा है, so this revenue will be the income of the firm. ये revenue क्या होगा? ये revenue income of the firm होगा, right? फर्म की जो भी sales हो रही हैं, वही उनको as उसके बदले में जो उनको amount मिल रहा है, that is what? That is the income of the firm, and that is known as what? That is known as what? That is known as total revenue. अब आपको total revenue आप कैसे निकालोगे? एक तो आपने कितनी आपकी sales हुई है, that is you need to know the quantity. What is the quantity? And what is the price of a commodity? Quantity into price. Okay, this is how you're going to calculate total revenue. Let's say अगर आपकी 10 quantity of any product, right, sold हुई है, and let's say the price is 3,000. Okay, what will be the total revenue? Total revenue will be TR is equals to Q into P. Q कितना है? Quantity sold is 10 into 3,000. And what will be the total revenue? It will be 30,000, right? It will be 30,000. ठीक है? So that is known as what? That is known as total revenue. Quantity into price जब आप निकालोगे, आप multiply करोगे the quantity sold
with the price, that is known as total revenue. ठीक है? Here you have an example too, that if a firm sells chairs, 30 chairs at a price of rupees 100 each, total revenue कितना होगा? TR is equals to Q into P. Q कितना है? Q आपका इधर है 30 और प्राइस कितना है 100, that is 3000 shares. Okay, so that is what the concept of total revenue is all about. Okay, now easy है ये. Moving further, let's talk about average revenue. अब एवरेज रेवेन्यू कैसे निकालते हैं? जैसे हमने एवरेज कॉस्ट निकाला था, likewise we have a concept of average revenue. एवरेज रेवेन्यू कैसे? It is the revenue per unit output sold. हर यूनिट ऑफ आउटपुट जो सोल्ड हो रहा है, जो बेच रहे हैं, जो सेल हो रहा है, उसके ऊपर कितना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, दैट इज नोन एज व्हाट? दैट इज नोन एज आपका क्या? दैट इज नोन एज योर एवरेज रेवेन्यू. Right, it is the revenue per unit output sold. Very simple. Average जब निकालते हैं तो क्या होता है? Per unit पे निकालते हैं. Beat average cost, beat average revenue. It is calculated on per unit, right? We divide it with the number of units sold. Okay. For example, you have the formula over here. Average revenue का formula is total revenue upon quantity. Okay. Now, अब आपका क्या है कि फॉर एग्जाम्पल जो आपका टोटल रेवेन्यू जनरेट हुआ है फ्रॉम बाय सेलिंग 100 चेयर्स, राइट? कितनी चेयर्स आपकी सेल हुई हैं? क्वांटिटी जो चेयर्स आपकी सेल हुई हैं वो है आपकी 100, ठीक है? उसके बाद जो टोटल रेवेन्यू से जनरेट हुआ है, लेट्स से द टोटल रेवेन्यू इज ऑफ 20,000. दैट इज एन एग्जाम्पल कि टोटल रेवेन्यू जो जनरेट हुआ है आफ्टर सेलिंग 100 यूनिट्स ऑफ चेयर, तो उससे आपका एवरेज रेवेन्यू क्या होगा? एवरेज रेवेन्यू विल बी इक्वल टू टोटल रेवेन्यू अपॉन क्वांटिटी, दैट इज एवरेज रेवेन्यू. टोटल रेवेन्यू कितना जनरेट हुआ? 20,000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटी सोल्ड, दैट इज 100. कितना आपका हुआ एवरेज रेवेन्यू? एवरेज रेवेन्यू पर चेयर विल बी ₹200, राइट? एवरेज रेवेन्यू मतलब पर चेयर कितना प्राइस पड़ा, पर चेयर जो रेवेन्यू मिला वो मिला 200 रुपीज. ओके, क्या है आपका फॉर्मूला? AR is equals to TR by Q. That is, you need to divide the units sold. Okay. Now, आपको एक चीज और समझनी है कि जो एवरेज रेवेन्यू का कर्व होता है और जो प्राइस है वो आपका सेम होता है एज इन जो 200 है. नाउ सिंपल सी बात है, अगर आप टोटल रेवेन्यू निकाल रहे हो और एक चेयर का प्राइस है 200 रुपीज, ठीक है, और क्या चाहिए आपको? आपने 100 चेयर्स आपकी सेल हुई, तो टोटल रेवेन्यू कितना होगा? टोटल रेवेन्यू विल बी 200 into 100, दैट इज 20,000, राइट? सो क्या इससे समझ आया? इससे वी अंडरस्टैंड दैट एवरेज रेवेन्यू का कर्व जो है और जो आपका प्राइस है दैट्स आर सेम. ओके, एवरेज रेवेन्यू का प्राइस, एवरेज रेवेन्यू का कर्व और जो प्राइस कर्व है वो हमेशा आपका सेम होता है, राइट? तो उससे हम व्हाट वी कैन डिड्यूस? वी कैन डिड्यूस दैट AR is equals to P. How? Okay, we have calculated average revenue here ₹200, ठीक है? इसी एग्जाम्पल से we'll calculate the price. ठीक, price is as in what? We'll calculate the total revenue. ठीक है, जब हमने टोटल रेवेन्यू निकालना था, टोटल रेवेन्यू कैसे निकाला था हमने? नंबर ऑफ क्वांटिटीज सोल्ड, कितनी क्वांटिटीज बेची? 100 क्वांटिटीज बेची, राइट? Into what is the price of per unit sold? That is 200, right? कितना हुआ? TR is equals to 20,000, right? And was this 20,000 जो था, that is the total revenue. अब आप ये देखो, जब हमने 200 रखा प्राइस, right, और हमारा एवरेज रेवेन्यू क्या है? That is also 200. That means what? Average revenue is equals to price. Average revenue जो है वो प्राइस के इक्वल होता है, ठीक है? नाउ सेलर्स जो है वो रेवेन्यू का जो रिसीट लेते हैं वो अकॉर्डिंग टू प्राइस लेते हैं, एंड दैट्स द रीजन व्हाई एवरेज रेवेन्यू एंड प्राइस आर ऑलवेज द सेम. दैट इज द कांसेप्ट ऑफ एवरेज रेवेन्यू. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कांसेप्ट, वी हैव मार्जिनल रेवेन्यू. Now, when I was teaching you the marginal cost ka concept, when I taught you the marginal utility ka concept, I've always told you one thing, that whenever you see the word marginal, whenever I'm repeating myself, you see the word marginal, always
it should be on your tips. Marginal होगा तो कौन सा word आएगा? It will be change. जब भी word use होगा marginal, we'll be dealing with the change. क्या change हो रहा है? Okay. So what is marginal revenue? Marginal revenue is actually the additional revenue which is generated when one more unit of output is sold. Okay, when one more unit of commodity is sold. So जो आपका average revenue, जो marginal revenue में जो additional revenue generate हुआ है, what is marginal revenue? When one more unit of output is sold, उसके बाद जो आपका average जो additional revenue generate हुआ है, that is known as what? That is known as marginal revenue. ठीक है? अब let's say आपकी at some point X units of commodity जो थी वो आपकी sell होती थी, right? किसी और point पर आपकी additional unit commodity है वो आपकी sell हुई. So when you will be calculating the marginal unit of commodity, right? Marginal revenue जो है जब आपको वो निकालना है, how will calculate marginal revenue? Marginal revenue का formula is very very simple. जो total revenue था of X commodities वो उसमें से 1 माइनस कर दो तो आपको एक एडिशनल यूनिट का जो एवरेज है, एडिशनल यूनिट का जो रेवेन्यू जनरेटेड है वो पता चल जाएगा. सो बाय फॉर्मूला इफ वी गो, फॉर एग्जांपल अगर आप टोटल रेवेन्यू ऑफ एक्स कमोडिटीज आपको पता है, ठीक है, और आपको मार्जिनल रेवेन्यू निकालना है, क्या करोगे? इस एक्स में से एक कमोडिटी माइनस कर दोगे -1, तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा? TR ऑफ n, लेट्स से वी टेक द कमोडिटीज n, ठीक है, n नंबर ऑफ कमोडिटीज है और आपको एक एडिशनल यूनिट से कितना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है वो निकालना है. तो कैसे निकालोगे? -TR ऑफ n-1, एक यूनिट ऑफ कमोडिटी माइनस कर दी, उसके बाद जो निकलेगा दैट इज नोन एज व्हाट? दैट इज नोन एज मार्जिनल रेवेन्यू व्हिच इज कैलकुलेटेड ऑफ एन प्राइस. ठीक, तो सिंपल क्या है आपका, यहाँ पे हम क्या माइनस कर रहे हैं? वी आर डूइंग माइनस, वी आर डूइंग चेंज. मार्जिनल रेवेन्यू हमेशा वी यूज द साइन डेल्टा. ओके, सो व्हाट इज मार्जिनल रेवेन्यू? इट इज द चेंज इन टोटल रेवेन्यू व्हेन वन मोर यूनिट ऑफ आउटपुट इज सोल्ड. जब एक यूनिट ऑफ आउटपुट और ज्यादा सेल होता है तब टोटल रेवेन्यू में कितना चेंज आता है. सो लेट्स से अगर आपका 100 यूनिट्स ऑफ आउटपुट अगर सेल हो रहा है, प्राइस है 200 रुपीज, तो टोटल रेवेन्यू आपका कितना आएगा? टोटल रेवेन्यू आएगा आपका 20,000. बट अगर यही आपकी एडिशनल यूनिट हो जाए, 100 से हो जाए आपकी 101, ठीक है, तो 101 इंटू 200, और उसको जब आप उसमें से 20,000 माइनस करोगे टोटल वाला, दैट इज फॉर वन कमोडिटी, राइट? वो आपका एक एडिशनल यूनिट का होगा. दैट इज व्हाट मार्जिनल रेवेन्यू इज. आई होप इट इज क्लियर टू यू. तो इसी तरीके से मार्जिनल रेवेन्यू आप कैसे कैलकुलेट करोगे? मार्जिनल रेवेन्यू इज कैलकुलेटेड एज चेंज इन टीआर, टोटल रेवेन्यू में जो चेंज है, डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटीज. टोटल रेवेन्यू में कितना चेंज है, कितनी क्वांटिटी में चेंज हुआ है, वो निकालने के लिए आपको ये हैव द फॉर्मूला एंड इट इज ऑफन रेफर्ड टू एज MR, डेल्टा TR अपॉन डेल्टा Q. That is what marginal revenue is. ठीक है? Now moving further, we have the relationships between AR and MR. AR यहाँ पे क्या है? AR is the what? Average revenue, right? And what is MR? MR is the marginal revenue. So how this average revenue and marginal revenue are calculated, you need to know about that. Now आपको एक चीज समझ आनी चाहिए. when you see the graph over here, this is let's say this as point A, okay? AB is a curve of AR. AB is AR का curve, right? point AB जो है वो AR curve है, ठीक है? point AC जो है AC is equals to MR, ठीक है? AC is equals to MR. तो ये जो आपको लाइन दिख रही है which is roughly half of average revenue is MR, और ये जो आपको लाइन दिख रही है that is AR which is average revenue. ठीक है? Now AR आपका maximum and constant हो सकता है when MR is equals to AR. मतलब MR
कभी भी आपका इससे ज्यादा नहीं जाएगा, एवरेज रेवेन्यू से ज्यादा कभी भी आपका मार्जिनल रेवेन्यू नहीं जाएगा. इट कैन मोस्ट प्रोबेबली be equal to AR but it will not go more. That is the first point which it says कि AR आपका maximum जब होता है constant होता है, कब होता है? When MR is equals to AR. जब ये MR ये AR की लाइन एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल आती है, उस केस में we say that AR is maximum and constant. Okay. अब आपका जो MR है मार्जिनल रेवेन्यू, इट कैन बी नेगेटिव. मार्जिनल रेवेन्यू ऐसे नीचे की तरफ जा सकता है, इट कैन बी नेगेटिव बट नॉट AR. एवरेज रेवेन्यू कभी भी, नेवर एवर एवरेज रेवेन्यू कैन बी नेगेटिव. व्हाई? बिकॉज एवरेज रेवेन्यू के लिए हमने क्या फॉर्मूला निकाला था? एवरेज रेवेन्यू के लिए हमने फॉर्मूला निकाला था टोटल रेवेन्यू अपॉन क्वांटिटी सोल्ड. ठीक है, एक बार को मार्जिनल रेवेन्यू नेगेटिव हो सकता है बट कुछ तो आपका सेल हुआ होगा, राइट? कुछ तो आपकी क्वांटिटी सेल हुई होगी, कुछ तो आपका होगा. सो AR कैन नेवर बी नेगेटिव. ठीक है. थर्ड जो रिलेशनशिप का पॉइंट है दैट इज MR is less than AR, then AR falls. जब भी आपका MR छोटा होगा AR से, उस केस में AR will always falls. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट है when TR is rising at an increasing rate. जब आपका टोटल रेवेन्यू बढ़ता है, ऑब्वियस सी बात है, टोटल रेवेन्यू, marginal revenue and average revenue, these three are in some way or the other connected. So whenever the total revenue increases, it affects marginal revenue and average revenue too. And affects in what manner? Affects in a manner as in वो आपके बढ़ते ही रहते हैं. So when total revenue rises or total revenue increases at an increasing rate, in that particular scenario आपका marginal और average revenue दोनों ही बढ़ेगा. How? अगर आपका टोटल रेवेन्यू बढ़ा, ठीक है, टोटल रेवेन्यू बढ़कर आपका लेट्स से फ्रॉम 20,000 बढ़ गया टू 40,000, राइट? न्यू टोटल रेवेन्यू कितना आ गया? न्यू टोटल रेवेन्यू हो गया आपका 40,000. नाउ इस 20,000 पर जब आपका MR कैलकुलेट हो रहा था और जब आपका AR कैलकुलेट हो रहा था, एज कंपेयर टू दैट, जब ये 40,000 का वैल्यू लेकर आप MR कैलकुलेट करोगे, मतलब TRN-1 करोगे, तो TR की जगह वैल्यू क्या डालोगे? 40,000 ऑब्वियसली, राइट? और जब आप AR के लिए डालोगे, पहले यू वर कीपिंग 20,000, लेकिन अब सिंस TR आपका बड़ा है और आपका TR बढ़ के हो गया 40,000, तो आप ऑब्वियसली 40,000 यू विल बी कीपिंग ऑन द न्यूमरेटर पार्ट, राइट? एंड आप क्वांटिटी भी रखोगे कुछ ना कुछ, यू विल कीप सर्टेन क्वांटिटी टू. सो पहले जब आप 20,000 से उसको डिवाइड कर दे, नाउ यू विल बी डिवाइडिंग इट बाय 40,000, राइट? सो लेट्स से अगर 10 क्वांटिटीज है, यहाँ पर भी आपके पहले 10 क्वांटिटीज थे, तो पहले इट वाज डिफरेंट एंड नाउ इट इज डिफरेंट. पहले आपका 2,000 था टोटल रेवेन्यू, अब आपका हो जाता है 10 से 10 डिवाइड करके इट विल हैव टू बी 4,000. सो व्हाट माय पॉइंट इज दैट जब भी आपका TR बढ़ेगा, उसके साथ साथ आपका AR और MR दोनों बढ़ेगा. व्हेन TR इज इंक्रीजिंग एट एन इंक्रीजिंग rate, right? Now we'll quickly see the TR, AR and MR curve under the perfect competition, right? Perfect competition में देख लेते हैं, perfect competitive market में देख लेते हैं what is the relationship between TR, AR and MR when more quantity is sold at the same price. एक ही price पे ज्यादा से ज्यादा quantity जब sell हो रहा है, what happens to the relationship between TR, AR and MR when it is a perfect competitive market? Okay, now at all the levels of output, right, at all the levels of output हमेशा AR is equals to MR रहेगा under the perfect competitive market. Perfect competition में AR is equals to MR हमेशा रहेगा, एक ही कर्व बनेगा आपका AR और MR का, right? लेकिन जब आपका perfect competitive market है and more quantities are sold at the same price, again आपको TR निकालना है, टोटल रेवेन्यू. अभी टोटल रेवेन्यू do get affected when the quantity rises or falls, right? So again, अगर आपका टोटल रेवेन्यू ग्रो हो रहा है at a constant rate, right? उसका मतलब क्या है? MR भी आपका constant होगा, and जब ग्रो हो रहा है at a constant rate, that means what? It will be having a positive slope. Okay, positive slope upwards. This shows what? This shows a positive slope upwards when what? When TR is constantly increasing. When TR is constantly
increasing. So it is a TR curve when TR is constantly increasing at the same price. आपका TR अगर constantly increase हो रहा है in a perfect competitive market, in that case it will see a positive slope which rises in the upward direction, right? Positive slope होगा from the origin, okay? And in that case AR will be equal to MR, जो आपका average revenue होगा, okay? The average revenue will be equal to total revenue. Okay, average revenue will be equal to total revenue, and this happens in the perfectly competitive market. Okay, so this was the relationship between TR, AR and MR. पहली क्या थी कि जब आपका all the levels of output आपका AR और MR हमेशा जो है वो आपका constant रहेगा in a perfect competitive market, और वो parallel रहेगा to x-axis. This is the x-axis. इसके देखो वो बिल्कुल parallel है. And the second thing is that when TR is increasing constantly at an increasing rate, in that particular scenario, आपका MR और AR जो है वो भी क्या होगा, वो भी आपका constant रहेगा, and they also will grow. So that is a relationship between TR, AR and MR under the perfect competitive market. Okay, with this we have finished the topic revenue. Okay, but before that, right now we have studied about the perfect competitive market, but again we have one more type of market left, and that is the monopoly or the monopolistic market competition, right? या तो monopoly या monopolistic market competition में if you see, ये जो आपका ग्राफ है, ये ग्राफ था आपका अंडर द परफेक्ट मार्केट कंपटीशन. बट जब आप मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक मार्केट कंपटीशन में देखोगे, सो इट विल नॉट बी लाइक कि टीआर हमेशा इंक्रीज करेगा एट एन इंक्रीजिंग रेट. इट इज नॉट लाइक दैट. In the monopoly or the monopolistic market competition, it is not like कि आपका हमेशा जो है AR is equals to MR. No, it will not be like that. Why? Because ज़्यादा quantity आपका sold होता है at a lower price. Why? Because in monopolistic market competition, what do you have? You have a large number of competitors. Competitors बहुत ज़्यादा होते हैं, right? So more quantity जो है ज़्यादा बिकती है at a lower price. Price जो है हमेशा वो lower keep करना पड़ता है. Okay, so in that case, average revenue और total revenue का जो curve है वो हमेशा और हमेशा negative होता है. Okay, the curve of average revenue and total revenue will always be negative. ठीक है. Now हमेशा जो आपका average revenue जो आपका हमेशा होता है, जो आपका marginal revenue होता है, वो at least twice होता है आपका किसके, आपका एवरेज रेवेन्यू के. सो इफ यू सी दिस पर्टिकुलर ग्राफ, ये पर्टिकुलर ग्राफ है आपका XC is AR, XB is what, is MR. If you see, it is actually the double, है ना. तो MR क्या है, MR is always half of AR. तो whenever you are making a graph, always make it in a manner कि MR हमेशा AR का half. Why? Because it declines twice as fast as average revenue. So let's say अगर average revenue आपका decline कर रहा है at a rate of 4, right? तो आपका जो marginal revenue है, it will decline at what rate? It will decline at a rate of 2. It declines twice. Okay. Now पहला point आपको समझा दिया कि average revenue and marginal revenue का curve जो है वो हमेशा negative होगा. Negative मतलब downward sloping. Negative means what? Negative means downwards sloping, right? As you can see it over here. Kisme? In the monopoly or monopolistic market competition. Okay. Now, marginal revenue can be negative, but average revenue kabhi bhi negative nahi hoga. This is one thing which I've told you already, right? So what does that mean? This means कि marginal revenue आपका decrease भी कर रहा होगा and positive. Total revenue आपका जब decrease करेगा at a decreasing rate. आप ऊपर देखो, this is the graph of total revenue. So when you see this graph, marginal revenue आपका zero कब होगा? Marginal revenue आपका zero तब होगा at point B when total revenue is highest at point A, right? When TR is highest, marginal revenue will be 0. और जब TR आपका fall करना शुरू करेगा, in that case marginal revenue will be negative, right? So this is the relationship between TR, AR and MR. ठीक है? I hope this is clear to you now that what happens in the monopoly or the monopolistic market competition. Okay.
Now with this, we have came to the end of the topic revenue. Hoping to see you guys in the next session. Till then, take care. Bye-bye. Thank you. And if you like this video, give it a thumbs up. Subscribe to Pratham Test Prep's channel if you haven't done already. And take care, guys. Bye-bye. Stay safe. Keep learning. Keep revising. All the very best for your boards, for your entrances, for everything. Bye, guys.